आवाज नहीं आएगी इनकी. You have to say something, you need to text in. I'll just keep an eye on that. So type of solid, unit that forms that solid, the structure of solid, and the example. अब जो solids हैं हमारे syllabus में we just have we only have these crystalline solids. Crystalline solids are the ones which have lattice present. So solid में अगर मैं start में ये lattice की definition भी लिख दूं, so lattice is a solid having fixed or regular arrangement of particles in it, right? That is what we call lattice. A solid having fixed or regular arrangement of particles is like, or it's just a specific fixed arrangement of particles that is termed as lattice. जब जो solids की types हैं उसमें we have ionic solids, and the ionic solids are the ones which have ions present in them, right? जैसे जितने भी ionic compounds हैं such as sodium chloride, magnesium oxide, etc. All the ionic compounds are like they have ionic lattice. और इनका जो unit है that makes this solid would be the ions, right? Positive, negative ions. अब देखिए NaCl का जो यूनिट है that is sodium and chloride ions. Magnesium oxide का भी इसी तरह से है. And the structure of an ionic solid is giant ionic lattice. I mean, it's not one molecule of NaCl that could exist alone. Even in the smallest particle of NaCl, powder अगर आप ले लें NaCl का table salt होता है जैसे, so it will have thousands of hundreds and thousands of NaCl units coming together. इसका जो structure है, it is giant ionic lattice. Giant ionic lattice. So ionic solids which are made from ions by ions, and they have giant ionic lattice present. Then we have covalent solids. Covalent solids के आगे types हैं, but there are types of covalent solids which are actually made from atoms. मतलब उनकी जो unit है वो atoms होते हैं, such as diamond, graphite, silicon dioxide, SiO2. These are solids which are made up of atoms as their unit. Like diamond or graphite are made up of carbon atoms, right? Or silicon dioxide is made from silicon and oxygen atoms. इसमें ions नहीं है. So इनका जो lattice है, this is also giant, and we call it giant covalent lattice. Giant covalent lattice. Then we have solids which are metallic solids. All the metals will come into this category of metallic solids. If I'll just write all metals here, like copper, sodium, magnesium, iron, सारे के सारे. So metals का जो unit है, it's atoms and ions also, right? Because metal atoms में से electrons delocalize होते हैं, and when the electrons are delocalized from an atom, it becomes positive ion. इसमें हम दोनों लिख देंगे, atoms / ions, positive ions. The lattice of a metal is giant again. I mean, अगर आप कहते हैं कि
copper, 1 gram copper, the 1 gram copper will have billions of atoms and ions of copper. So this is also considered a giant structure. Giant metallic lattice. So when you're asked about what structure copper is, for example, तो फिर आपने पूरा word ही लिखना है, giant metallic lattice. This word structure में जब हम कहते हैं giant metallic lattice, तो it explains the size of the particles like solid. It's like giant. फिर हमें बताता है कि इसमें bonding metallic है, and then it tells us that it has regular lattice present. So we write it completely for the structure of a solid. अच्छा, इसके बाद फिर next solids are simple covalent. So covalent की giant covalent and simple covalent, as in we could say that. And you clean the camera. Oh, I don't think camera is that much dirty. It's like I can't even reach the lens there. Something. It's good now. I haven't done anything. Chale, good. Simple covalent. Simple covalent may the units are molecules. And the examples for simple covalent solids are ice, iodine, P4, acid, P4O10. Now these examples that I'm writing here, they are the ones that you need to know and remember, especially for simple covalent solids. MCQs में बहुत आता है ये, which of the following solid has simple lattice or simple molecular lattice. तो उसमें ये typically P4, iodine और S2, S8 वगैरह होते हैं. So simple covalent solids lattice is simple molecular lattice. Like their lattice is made up of molecules, such as, ice is made from water molecules. Iodine solid is made from I2 molecules. तो ये types of solids की जो हमारे syllabus में है. अब जो start में that melting boiling thing I was referring to कि अक्सर students को उसमें marks कट रहे होते हैं, उसको जरा थोड़ा हम यहाँ पर discuss कर लेंगे so that you could actually remember that point when you're asked to answer about melting point of a solid. अब देखें, if you're asked that say if this NaCl is heated and it turns to molten form liquid, so NaCl जब हम melt करेंगे, तो what kind of bonds would break in NaCl? Ionic bond, strong ionic bond, and forces of attractions would be like strong electrostatic forces, right? In fact, that will be for all the ionic solids. So they will have very high melting points. Like NaCl का melting point is 802 degrees Celsius if it's pure. अच्छा, इसी तरह से जब हम डायमंड ग्रेफाइट या सिलिकॉन, लेट्स से सिलिकॉन डाइऑक्साइड को अगर हम मेल्ट करते हैं, तो इसमें कौन सी टाइप के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे? Yunus and Yusuf, you guys can actually text and I'll see that as such. So what sort of bond would we break when we melt silicon dioxide? Again, strong covalent bonds, right? And billions of them maybe. SiO2 का आप छोटे से छोटा lattice भी तोड़ेंगे, so we are not overcoming 1 or 2 bonds. They're like giant lattice है, तो huge number of bonds. इसका melting point भी काफी high होगा. In fact, NaCl से तो बहुत ज़्यादा है. But then again, if I'm trying to melt, let's say this one, ये जो simple molecular है, इसमें मैं ice की example ले सकता हूँ. You can relate to that easily. Ice is actually made from water molecules, right? अब थोड़ा सा सोच के बताना, because this is where normally mistakes are there. जब हम ice को melt करेंगे, what kind of bonds do we break? Covalent bond. तोड़ दें. Nice. जी, कासिम.
आइस को मैंने मेल्ट किया वैस, कौन से टाइप के बॉन्ड ब्रेक हुए, ठीक है ना। पहले देखो, पहले आप लोगों ने आंसर आराम से दिए सिंपल कोवलेंट पेपर्स के जो, और ये एग्जामिनर का भी फिर फेवरेट एरिया बन जाता है, बहुत सिंपल है। आई विल हेल्प यू इन दैट, याद रखना आपने। देखिए हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ ली थी, एंड लेट्स से इफ आई आइस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर attracted to each other, right? So what sort of attraction do you think are these attractions here? Yeah, I've got the right answer online and face to face also. TIDB? वो नहीं होगा, क्या बात है, जो होगा वो बताओ ना। जी, नहीं आंसर आ रहा, नाम बताएं उसका। That is of course intermolecular force. What sort? तीन टाइप्स है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड है, परमानेंट डायपोल है, TIDP, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अननोन कंपाउंड आ जाए तो चलें, उसमें डिसाइड करने में फिर थोड़ा टाइम लगना चाहिए कि इसमें कौन से बॉन्डिंग है। वाटर में तो फॉर श्योर याद रखना आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। इसमें व्हेन वी मेल्ट सिंपल कोवलेंट वी डोंट ब्रेक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स देयर, राइट। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हो तो इसका मतलब है कि अगर मैं आइस को मेल्ट कर दूं तो आई विल बी सिंपली गेटिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, and that is not possible. I mean water decomposes at about 2000 degrees Celsius. अगर आपने water से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालना है तो it will take about 2000 degrees Celsius, and only then even it 10 to 20% water decompose होता है. Water is a very stable compound. लेकिन what is holding water molecules in solid state is intermolecular force, and that is not that strong as ionic bond or covalent bonds are. तो जब simple molecular solids को हम melt करते हैं, we typically overcome intermolecular forces, not very high melting points. इसको हम इधर लिख भी देते हैं कि like simple covalent solids have lower melting points than other solids, क्योंकि इनके structure कोई giant structures नहीं है, and then we don't have very large number of strong type of covalent or ionic bonds present in them which break. तो अब इसमें अगेन हम जो इनकी लैटिसेस की स्केचिंग है, ड्राइंग है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे सिंपल मॉलिक्यूलर से, बिकॉज आई एम श्योर आपको NaCl का, लैटिस, डायमंड ग्रेफाइट का काफी आइडिया होगा, बट आइस और आयोडीन वगैरह थोड़े न्यू है ये लेवल में, उन्हीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो आयोडीन, in fact the ones that I've written on the board in this examples column, इसमें NaCl, magnesium oxide, diamond, graphite, silicon dioxide and iodine, जिनको मैंने टिक किया है, इनके क्रिस्टलाइन लैटिस की ड्राइंग्स आपके सिलेबस में, ठीक है, you get to draw them even. तो अब थोड़ा पिछले 4-5 years से इनकी डायग्राम्स कम आ रही हैं for some reason, I don't know. Again, there are questions in which, for example, iodine lattice has been asked for 4 marks even. NaCl की आती रही है वो 3 marks, 4 marks की, तो फिर आ सकती है. This pattern you would observe yourself when you'll do yearly papers. आप देखेंगे हर 3, 4, 5 years बाद they sort of repeat the entire question again. तो it's just to break that monotony of recent papers. उसके लिए फिर आप हमेशा उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें जो रिसेंट ईयर्स में नहीं आ रहे, जैसे कल वेपर प्रेशर मैंने कराया था आप लोग. अच्छा, आयोडीन के लैटिस के जो पॉइंट्स हैं वो मैं लिख के इसका लैटिस भी बना दूंगा. ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे ज्यादा MCQs में, एंड यू नीड टू सॉर्ट ऑफ मेमोराइज देम इवन. सो iodine's lattice is cubic. It is a gray black or blue black solid. टेबल में याद, ये मस्त है और ये भी मस्त है, ये बहुत आती है. आई मीन एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जी व्हाट सॉर्ट ऑफ लैटिस P4 हैज, फिर आप बताओगे सिंपल मोलेकुलर लैटिस. इस तरह से MCQs में बहुत आती हैं चीजें. हाँ, आई मीन एनी मेटल एक्सेप्ट से मर्करी फॉर एग्जांपल, दैट्स एन एक्सेप्शनल, वो लिक्विड है, लेकिन बाकी जो भी मेटल है ग्रुप 1 की ये ट्रांजिशन है वो सारा उसके लिए ये वर्ड्स यूज होंगे.
और बाकी ऊपर ये मैंने लिखे, लेकिन दिस विल गो फॉर ऑल आयोनिक कंपाउंड्स, दे हैव आयोनिक बॉन्ड एंड जॉइंट आयोनिक लैटिस। और फिर इनकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आती हैं याद करने वाले पॉइंट्स में। सो आयोडीन इज अ ग्रे ब्लैक सॉलिड एंड इट sublimes at 38 degrees Celsius to form purple vapors. You don't need to memorize the temperature as such, but you need to know that it sublimes easily at low temperature. 38 is like just slightly above room temperature. तो थोड़ा सा आप वार्म करें अगर evaporating dish में iodine solid, तो it easily makes those purple vapors. तो इसमें आपको याद रखना है कि iodine sublimes and it forms purple vapors. So iodine in solid state is black, but its vapors are purple. And based on this property, at time you pick the solid which is like iodine, for instance. इसके बाद it is sparingly soluble in water. We use this sparingly soluble word in chemistry for anything that we typically call insoluble. लेकिन ये है कि प्रॉपर वर्ड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल। तो वाटर में इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, लेकिन ये है कि जो, और इसकी रीजन अगर आप सोच के बताएं मुझे, व्हाई आयोडीन यू थिंक इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, एनी रीजंस? नाउ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, सॉल्युबिलिटी वगैरह जब भी आ जाए ना, तो यू नीड टू थिंक अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगेन, like the two things that you're trying to make soluble, what sort of interactions, if they have any, are possible. Iodine kya hai? Is it polar, non-polar? Iodine non-polar hai, right? Because the bonding atoms are same. इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो जाएगा। हम तो 0.3 वाले को नहीं मानते, तो ये तो जीरो है। और नॉन पोलर को मैं पोलर से मिक्स करना चाह रहा हूँ, so it won't happen, right? So because iodine is non-polar, it cannot dissolve in a polar solvent like water. Then it is soluble in non-polar solvent, right? इसके आगे आप लिख लें sparingly soluble in water as it is non-polar. But then it is highly soluble in CCl4. CCl4 carbon tetrachloride, is it polar or non-polar? It is non-polar. Why? Yes, its dipoles cancel out. ठीक है, हमने dipole moment में भी पढ़ा था, और उधर मैंने point out किया था कि it's a non-polar solvent and you need to memorize it in terms of iodine solubility in CCl4 as a non-polar solvent, since CCl4 is non-polar. अब इसके बाद बाकी इसका सिर्फ लैटिस की डायग्राम और वो है, तो वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड अगेन इफ यू गाइस कुड ट्राई आंसर दैट योरसेल्फ, पेपर में फिर याद रह जाएगा। अगर मेरे पास आयोडीन का लैटिस है, सॉलिड है, तो व्हाट काइंड ऑफ अट्रैक्शंस डू यू थिंक द लैटिस ऑफ आयोडीन विल हैव? लिखने पे जोर है, क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहे आप लोग। अगर मैं आयोडीन का लैटिस है, मेरे पास सॉलिड है आयोडीन, तो व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस विल आयोडीन लैटिस हैव इन इट? इस तरह के क्वेश्चन के आंसर को आपने सोचना है। क्या सोचना है कि आयोडीन, देखो जैसे मैंने आइस की एग्जांपल आप लोगों को दी थी, तो आइस के लैटिस कौन बना रहा है? मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। उसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल की वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन डिसाइड की, हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट? अब जब हम आयोडीन लैटिस सॉलिड की बात कर रहे हैं, वी नीड टू अगेन इमेजिन आयोडीन, और उसका लैटिस अगेन इज मेड बाय मॉलिक्यूल्स, आयोडीन मॉलिक्यूल्स। अब आपने सोचना है कि आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ कौन सी अट्रैक्शन होगी? दिस वन इज अ कॉमन रॉन्ग आंसर, यूसुफ, so that is not correct. आयोडीन की आयोडीन से कराएं आप अट्रैक्शन।
मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की नहीं बात कर रहा मैं। नहीं आ रहा ना आंसर? दैट वन इज राइट बट इट टुक टाइम। अब मैं यही क्वेश्चन अगर बोर्ड पे लिख के पूछता ना डिफरेंट तरीके से, उसका आंसर आप लोगों को फौरन आ जाता। देखो कैसे। अब ये आयोडीन मॉलिक्यूल है और ये आयोडीन मॉलिक्यूल है, इनके बीच में अट्रैक्शन, कौन सी अट्रैक्शन? टीआईडीपी। अब मैंने बोर्ड पे लिखा, पेपर में तो बोर्ड नहीं होगा ना, पेपर में तो स्टेटमेंट होती है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो उसको अंडरस्टैंड करना आपको मुश्किल लग रहा है ना, रिटन स्टेटमेंट को तो आपने अप्रीहेंड करना है ना सारा। मुश्किल कुछ नहीं है, इट्स लाइक सेम थिंग आस्क्ड इन डिफरेंट वेज। और फिर जब एग्जामिनर उसको और ट्विस्ट करता है तो क्वेश्चन और मुश्किल। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इश्यू नहीं है, जैसे मर्जी पूछे। सिंपल मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन होल्डिंग द लैटिस, सो van der Waal force, and we'll say we'll go like weak van der Waal specifically, ठीक है? अगर आपने TIDP नहीं लिखना तो weak van der Waal। तो फिर आयोडीन मॉलिक्यूल के, आयोडीन मॉलिक्यूल से नॉन पोलर TIDP। इनफैक्ट TIDP में भी हमने लिस्ट किए थे ये सॉलिड्स, इन सब में वीक वैन डर वाल फोर्स होती है, इवन ग्रेफाइट में। तो अब जब वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो दैट्स व्हाई इट सबलाइम्स इजीली, ठीक है ना? उसको मुझे कोई स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड नहीं ब्रेक करने पड़ रहे। बट इफ यू से कि व्हेन वी हीट आयोडीन तो दिस स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, तो फिर तो इसके एटम सेपरेट हो जाने चाहिए, ठीक है? तो इसकी बॉन्ड की एनर्जी 242 किलो जूल्स है, अच्छी खासी एनर्जी है। तो जब आप आयोडीन को मेल्ट कर रहे हैं, सब्लाइम कर रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली ओवरकमिंग द TIDP फोर्सेस, ठीक है? तो इसलिए वो बहुत थोड़ा हीट इतनी नहीं चाहिए, जस्ट 38 डिग्री सेल्सियस। अब कहने को ये चीजें बड़ी सिंपल हैं, और एट टाइम देयर वाज अ टाइम आई नेवर स्पेंट एनफ टाइम ऑन सॉलिड्स एंड ऑल के जी, ये तो बड़ा आसान है। But then eventually we saw के examiners set very tricky questions, क्योंकि जब स्टूडेंट सिर्फ लैटिस को रट लेते हैं और बस ये रट लिया तो कॉन्सेप्चुअल चीज जब पूछे तो नहीं आएगी। अब हम लोग इस पे काफी सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन करते हैं। अच्छा, अब इसके लैटिस की अगर डायग्राम आ जाए तो वी सेड इट्स क्यूबिक लैटिस, सो वी ड्रॉ अ क्यूब and we try and keep it in dotted lines, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में TIDP फोर्सेस हैं। इफ यू कैन नॉट ड्रॉ डॉटेड क्यूब तो सॉलिड लाइन से बना लें, लेकिन क्यूबिक ही बनाना है इसको। अब like a cube has 6 sides, like a dice has 6 sides, तो क्यूब की भी 6 sides हैं। तो what you need to do is I'll just draw one side, उसको आप समझ लें, फिर उसको हम replicate कर देंगे 5 more times। तो देखें, अगर ये साइड वाला लैटिस फेस इसका मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो what will be the arrangement of iodine molecule, like 4 iodine molecules on the corner of the face and one will be in the middle। अब ये जो सर्कल्स मैं बना रहा हूँ, देयर आयोडीन एटम्स पेयर्ड अप एज I2 आता है। बिल्कुल, अभी मैंने स्टार्ट में कहा था ना, पिछले 4-5 साल से ये लेटेस्ट डायग्राम्स नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा अगर आप 2012-13 से पहले वाले पेपर करेंगे तो उसमें ये आयोडीन भी 4-5 मार्क्स तक आया हुआ है। अब 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो फिर तो उसको ड्रॉ करके प्रॉपर लेबल भी करना पड़ेगा। तो देखिए, ये मैंने सिंगल साइड ड्रॉ की है, अगर आप लोग बोर्ड पे देख लेंगे तो फिर मैं इसको रेप्लिकेट करूंगा, वरना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो क्यूब की 6 साइड 6 फेसेस होते हैं। तो अब मैंने ये वाला फेस ड्रॉ किया है, दिस वन। सो आपने करना ये होगा कि 1 2 3 4 ऑन द कॉर्नर, ऑल दीज आर आयोडीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है? और एक मिडल में, जो मिडल वाला है सेंटर में, उसको थोड़ा फर्क करने के लिए वी जस्ट शेड इट, और अदरवाइज बट देयर ऑल आयोडीन मॉलिक्यूल। तो आप बेशक ना शेड करें, कोई मसला नहीं। और इसी तरह आपने सारे फेसेस पे 5 मॉलिक्यूल्स दिखाने हैं, like each face has 4 1 5 top one even, but this will be count, these two will be counted in top face as well। जब इसको आप कंप्लीट बनाएंगे तो there will be 5 molecules in each face, सारे कॉर्नर्स पे और सबके सेंटर्स में। फिर तो बैक साइड वाला, लेफ्ट साइड, डाउन साइड एंड फ्रंट। And again, just to make the one which are in the center of the face different, we shade them।
So when you draw this, then again we label the lattice, and that is like these circles are iodine molecules, and these dotted lines are TIDP forces, weak van der Waals forces, and cubic lattice. अब हम थोड़ा सा क्विकली एक और कर लेते हैं, एटलीस्ट ये डायमंड ग्रेफाइट सिलिकॉन डाइऑक्साइड आसान है, इनमें से हम SiO2 कर लेते हैं, ठीक है। डायमंड ग्रेफाइट थोड़े कंपैरेटिव है, उनको एक साथ करेंगे। आइस आइस इज अदर वन व्हिच इज इन द सिलेबस, बट आइस की लेटेस्ट ड्राइंग हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें एक दो और पॉइंट एंड ट्रिकी, तो वो मैं फिर चाह रहा हूँ कि फेस टू फेस जब आ जाए ये लोग भी तो फिर एक्सप्लेन करूँ। SiO2 आसान है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, if you remember this silicon dioxide resembles diamond, ठीक है। IGCSE में पूछते थे वो आपसे कि जी to what form of carbon does silicon dioxide resemble, इसको मैं ऊपर स्टार्ट में लिख देता हूँ। Silicon dioxide lattice resembles diamond. And then the properties that we need to know about silicon dioxide are like its lattice is tetrahedral. Now iodine वाले में अगर आपसे वो again पूछ ले कि जी what holds the lattice of iodine together, अब ये same thing maybe in different words, TIDP, right? So what holds the lattice together is TIDP. अगर एक solid का lattice को weak force hold कर रही है तो उसका melting point high नहीं होगा, but when it's being held by some strong bonds, ionic, covalent, फिर उसका melting point high होगा। Like silicon dioxide is tetrahedral, and इस केस में क्या होता है कि each silicon is covalently bonded with 4 oxygen atoms. It's hard and crystalline solid. I mean, its lattice is hard and it is crystalline. And then it is an acidic oxide, but because it's a giant covalent substance, so it's insoluble in water. Silicon dioxide is like sand. So जो simple acidic oxides होते हैं, like gases for instance, they are soluble in water, but this one is not, and because of its giant lattice structure. इसको अगर हम ड्रॉ भी कर लें, SiO2 का लैटिस बना लेते हैं डायमंड की तरह ही है, लेकिन फर्क सिर्फ है कि डायमंड में all the atoms are carbon और इसमें we have 2 atoms, silicon and oxygen. So what you have in syllabus is the lattice of SiO2. I mean, you need to draw the lattice of SiO2 by showing 2 atoms of silicon in it, ठीक है, minimum. आप 3 बना दें, 4 बना दें, but बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 से कम पे marks नहीं है। So when you draw the lattice of SiO2, either you could use symbol Si and O, or you could use these circles, but try and keep them in tetrahedral shape, इस तरह। और फिर आप साइड पे की बना सकते हैं कि लेट्स से अगर इसको मैं शेड कर दूं तो इट्स से शेडेड वन इज सिलिकॉन एंड द क्लियर वन इज ऑक्सीजन, या इधर ऐसा ही रो लिख दें। So this is like the unit tetrahedral arrangement is in silicon dioxide, and this repeats. I mean, फिर ये oxygen will further be attached with
one more silicon each one of them, और फिर ये आगे तीन तीन ऑक्सीजन से ओवर अटैच हो जाएगा. So when I draw this much, I've already shown two units with silicon. ठीक है, दो टेट्राहेड्रल, एक टेट्राहेड्रल सेकंड टेट्राहेड्रल. इसके आगे अगर आपने इसको कंप्लीट करना है तो फिर आप इन तीन तीन इन पे बना दें, लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेटर्स ड्रॉ करने का फायदा नहीं. And again, these are the strong covalent bonds. And very briefly, if you could add in the use of silicon dioxide, it's used in making of glass, cement, and in the inner lining of furnaces. Because इसका melting point high होता है, तो furnaces की inner lining, glass, cement, construction material में, sand is one common material used. Uses भी थोड़े आने चाहिए इनके आपको. इसको मैं यहाँ पे रोकता हूँ. नेक्स्ट हम सॉलिड्स करेंगे मंडे को, ट्यूसडे को, लेकिन आप लोगों का बॉन्डिंग का टेस्ट है, ठीक है ना, मिस नहीं करना और प्रिपेयर करके करना है. अगर आप लोग तैयारी करके टेस्ट देना तो आधे से ज्यादा काम तो साथ साथ हो जाता है, लेकिन अगर टेस्ट तैयारी नहीं करेंगे तो फिर एक महीने में तैयारी नहीं होगी. ठीक है, आई होप यू आर डन राइटिंग यूनस एंड यूसुफ. That will be all then. So